मुफाहमत की यादाश्तों पर नाज़रीन, आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त 2 रोज़ा दौरे पर जो हैं वो श्रीलंका पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो बराह रास्त मनाज़िर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब है जो कि जारी है और इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं। और अगर बात की जाए वज़ीर-ए-आज़म के हमरा भी शाह महमूद कुरैशी और जुल्फ़िकार, जबकि अब्दुल रज़ाक दाऊद भी हमरा मौजूद हैं। बराह रास्त मनाज़िर आप हमारी आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुंच चुके हैं और ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि दस्तखत की तकरीब जारी है। मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की ये तकरीब बराह रास्त आप हमारी आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है ये पहला दौरा है और आज वो 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है और बच्चों ने उन्हें जो है फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया और इनके साथ उनको तोपों की सलामी भी दी गई है और गार्ड ऑफ ऑनर भी इनको पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुंच चुके हैं और ये जो इस वक्त तकरीब जारी है ये मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब है जो कि आप हमारी आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त मुनाज़िर देख रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुंच चुके हैं, मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब जारी है। We thank Mr. Mohotala and Mr. Atif Riaz Bukhari. The third Memorandum of Understanding between the Industrial Technology Institute of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the International Center for Chemical and Biological Sciences of the University of Karachi in the Islamic Republic of Pakistan will be signed by Dr. Ms. J.K.R. Radhika Samarasekara, Director General of the Industrial Technology Institute of Sri Lanka, and His Excellency Major General Muhammad Saad Khatak, the High Commissioner of Pakistan to Sri Lanka. पाकिस्तान और श्रीलंका आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो तकरीब जारी है वो मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब जारी है। बराह रास्त मनाज़िर आप हमारी आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है ये पहला दौरा है श्रीलंका का और वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म ने रेड कारपेट पर इनका स्वागत किया गया और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि आज जो तकरीब जारी है मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब जारी है और 1-to-1 मुलाकात भी होगी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त जो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुंच चुके हैं और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई है। 1-on-1 वज़ीर-ए-आज़म की जो है वो मुलाकात भी हुई है श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म से। बराह रास्त मनाज़िर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। The signatories will also sign the 4th intent of cooperation between the Industrial Technology Institute in Sri Lanka and ComSat University Islamabad. This will be signed by Dr. Radhika Samarasekara, Director General. I have very fond memories since then of Sri Lanka, and I want to say that we watched Sri Lankan cricket team develop from a non-test playing status to win the World Cup, and World Cup winning in Pakistan. So me and the cricketers who saw the evolution of the Sri Lankan cricket team, we felt good because it was a team from the subcontinent that emerged into a world-class cricket team. So I just wanted to mention that because that was my association with Sri Lanka until this visit of mine. This visit is to strengthen our bilateral relationship. It is to strengthen our trading ties. Pakistan is part of the Belt and Road Initiative of China. CPEC is one of its flagship program, and it means connectivity. And so I've asked my delegation here to find ways and means where we can enhance our trade and connectivity, and through CPEC connectivity right up to Central Asia for Sri Lanka. We have also discussed other areas where we can
enhance our trading ties, where Sri Lanka can benefit from Pakistan's connectivity in the future right up to Central Asia. And our trading ties will also mean that the two countries will get together, will come closer together. We shared a common problem of terrorism. Pakistan suffered 10 years of the worst kind of terrorism, where we lost 70,000 people. And we know that Sri Lanka for 30 years combated terrorism. And I'm pleased to say that Pakistan played its part in helping Sri Lanka to resolve this problem, which was impeding your development and your growth. And a country which relies on tourism can never progress if there is terrorism. Can't have investment if there is terrorism, because that's what happened to Pakistan. In those 10 years, tourism dried up and hardly any investment came into Pakistan because of the threat of terrorism. So we share that common problem, and now we have faced another problem, which is the coronavirus. I know Sri Lanka has suffered like all those countries which depend upon tourism. And we discussed how the developed countries can help the developing world at this time. That the developed world right now should not be insular. They must realize that this is a problem that has afflicted everyone, but specifically it has hit the poor countries more, and the poor in all the countries much more. The poor have suffered everywhere, but the poor countries have suffered the most. So we have discussed how we can jointly work on the poor countries from getting debt relief. In Pakistan, we came up with the biggest stimulus package in our history, $8 billion. But when you compare the United States, the stimulus package in the United States is almost $3,000 billion. US has a population of 330 million. Pakistan's population is 220 million, 70% of the US. And yet the total amount of money we could give as a stimulus package because of those who suffered from the coronavirus was $8 billion compared to $3,000 billion in the US. So this is the discrepancy. And the coronavirus has exposed this huge inequality in the world. And that's why I feel that the world organizations like the United Nations should step in and look after the countries that have taken a real beating because of this coronavirus. Apart from that, Mr. Prime Minister, I want to invite you again in front of the media to Pakistan. And Pakistan has probably one of the greatest Buddhist heritage in the world. We recently discovered a sleeping Buddha, which is probably the biggest in the world. It's a 40 feet sleeping Buddha, because the north of Pakistan was the center of the Gandhara civilization, the ancient Buddhist civilization. So we are also going to invite people from Sri Lanka to come over, and we are planning a Buddhist trail where all the great shrines and places for those from the Buddhist community, the religion, can come over to our country. And of course, I start with inviting you most of all, Mr. Prime Minister. And thank you again for your hospitality. Thank you very much. And thank you very much for